Now, the caught in this political crossfire are thousands of Rohingyas, most of whom are living on the margins of society. The question is, should they be deported back or should they be allowed to stay fearing persecution in Myanmar? India today visited one such shelter home or detention center, as the center would like to call it, where most people do not want to return to Myanmar fearing persecution on religious grounds. Most Rohingyas, remember, are Muslims. Here is tonight's ground report. For hundreds of Rohingyas, this slum cluster in Kalindi Kunj has been their home away from home for years now. Persecuted by the state forces and Buddhist majority in their own country, Myanmar, they have taken shelter in India. As the sun sets, ending another day in their hopeless lives, as they describe it, a group of men huddle together to play Ludo on their smartphones. It's a common pastime around here. The Union Home Ministry's assertion that the Rohingyas will be put in detention centers and ultimately deported is a hot topic for discussion today. हमने अगर कोई गैर कानूनी काम करता तो डिटेंशन सेंटर में डाल देता सरकार, वो तो हमारा कोई बोलने का हक नहीं है. आप कैसे डालेंगे डिटेंशन सेंटर में? हमारे पास प्रूफ है, यूएन का कार्ड है, तो डिटेंशन सेंटर के डालने का कोई मतलब ही नहीं है सर. 42-year-old Kabir Ahmed came to India in 2012. He runs a small shop in the colony for a living. Many here do odd jobs to make ends meet. हम तो सुन रहे हैं हमें पुराना बिल्डिंग में ले जा रहे हैं. आप कह रहे हैं अभी डिटेंशन सेंटर में ले जा रहे हैं. जैसे इलीगल जो रह रहे हैं उसको डिटेंशन सेंटर में डाल सकता है. हम तो ऐसे मजदूरी दिहाड़ी मजदूरी करके खा रहे हैं सर. हम एक बार ने दो तीन बार आग में जल चुका है. They say they don't mind the occasional fire as long as they get roof over their head. But nobody wants to go to a detention center. हम अगर यहाँ पे जुग्गी में रह रहे हैं फिर भी हम अपने आप को सेफ मानते हैं. अगर हमारे जुग्गी जल भी रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो हमारी किस्मत की बात है, तकदीर की बात है. हमने देखा नहीं किसने जलाया किसने नहीं जलाया, तो मतलब ये एक जेल ही है सर, समझ लो. डिटेंशन कैंप, हाँ डिपेंडेंट रहेंगे, तो वहाँ पे चौकीदारी रहेंगे, मतलब देखभाल रहेंगे. आप मतलब कहीं भाग भी नहीं सकते. तो सर ये तो उनको कह रहा जाता है जो कानून के खिलाफ काम करते हैं, जो गैर कानूनी काम करते हैं. Mariam came to India as a 15-year-old. Her father owned land in Myanmar. He was gunned down by the military, says Mariam. Here, her main concern is the education for her 3 kids. छोटा बच्चा के लिए पढ़ाई के लिए दिक्कत हो रहा है. Life in India is no luxury, but at the end of the day, there is food on the table. यूएनएचसीआर की तरफ से राशन दे जाते हैं. 3 किलो दाल और 3 किलो तेल, 3 किलो नमक, और ये देते चावल 70 किलो. दिल्ली सरकार के तरफ से पानी और लाइट. A return to home is unthinkable for her. हम वहीं बर्मा नहीं जाएंगे, इसके लिए सॉरी हम, क्योंकि हमारा जहाँ पे पापा को मारा, हम पापा बुला नहीं पाया, कुछ भी बुला नहीं पाया, इसलिए नहीं जाना चाहता. Hunted in their homeland, unwanted in India. The Rohingyas are wondering what awaits them next. The MHA has said that Rohingya Muslims will be sent back to their home as per law. Until then, the settlements like this one must be immediately declared as detention center by the Delhi government. All this while, the fate of the Rohingya refugees living in the country and in the national capital has suddenly become uncertain. With video journalist Nasir, this is Amit Bharadwaj reporting for India Today from Delhi.